Assalamu alaikum everyone. I hope you're having an amazing day. So welcome to another podcast. और इस podcast में हम बात करेंगे एप्पल की recent updates जो कि iOS 17.4.1 and macOS Sonoma 14.4.1. So let's get started. So सबसे पहले बात करते हैं iOS 17.4.1 जो कि एप्पल ने रिलीज़ की है लास्ट वीक। और इसके अंदर एप्पल ने मल्टीपल सिक्योरिटी पैचेस किए हैं और एप्पल ने जो है like they have defined, like they have released some of the security patches for iPhones and iPad OS. um, First of all, ये available है for all the iPhones which are supporting iOS 17 as well as all the iPads which are supporting iPadOS 17. एंड इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल ने एक सिवियर बग फिक्स किया है विच इज़ रिपोर्टेड बाय निक गैलोवे ऑफ गूगल प्रोजेक्ट ज़ीरो। इसके अंदर ये था कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी पिक्चर प्रोसेस जो है वो लीड कर सकता था फॉर आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूशन, जिसकी वजह से द हैकर्स कैन कम टू योर फोन एंड गेट सम डेटा और समथिंग। ये पैच रिपोर्ट हुआ था व्हेन दे वर एडिटिंग फ़ोटोज़ फ्रॉम द फोटोज़ ऐप, एंड उसके थ्रू जब उस प्रोसेसिंग के दौरान देयर वाज अ लूप होल वेयर a hacker can go inside your what you call it iPhone, and then they can take out the data from there. और दूसरा जो बग उन्होंने फिक्स किया है, सेकेंड बग इज़ वेब RTC, और अगेन इट्स reported by Nick Galloway, and जब प्रोसेसर इनपुट वैलिडेट करता है फॉर द टू प्रोसेस द इमेज, इस दौरान there was some problem which lead to the hacking of your data, but Apple has fixed that issue. एंड उसके बाद एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा ट्वीक्स की हैं iOS 17.4.1 के अंदर। यूजुअली 17.4 जब रिलीज़ हुई थी, एज इट वाज अ मेजर अपडेट, एप्पल ऑल द आईफोन्स विच वर अपडेटेड टू द लेटेस्ट वर्जन वर हीटिंग अप। और अब 17.4.1 के अंदर हीटिंग इश्यूज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं फॉर 15 सीरीज़, 14 सीरीज़, 13 सीरीज़ एज वेल एज़ 12 सीरीज़। एंड बहुत सारी चीज़ों को एप्पल ने पैच किया है, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, visuals as well as animations as well as music as well as आपके messages, iMessages, like everything is now working totally fine. and जो क्योंकि एप्पल को कंप्लाई करना था DMA यूरोप की वजह से, so they have to release some patches in order to get third party app stores as well. और there are some small minor updates, जैसे कि पॉडकास्ट ऐप के अंदर there was some errors while getting transcript, there was an error while getting lyrics from Apple Music, there was a lag on camera application after iOS 17.4 जो कि एप्पल ने iOS 17.4 में 17.4.1 में फिक्स कर दिया। so if you are not on the latest update, I will request go and update it. और जो लोग ये कह रहे हैं कि बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो रही है, नो, द बैटरी हेल्थ हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इन 17.4.1, एंड फ़ोन हीटअप भी नहीं हो रहा वाइल चार्जिंग और while using it for a longer time. Yes, if you are playing Modern Warfare or let's say Call of Duty Warzone Mobile, your phone will heat up to that extent that you need to switch off the game. और ये issue जो है Call of Duty ने already acknowledge किया है, and they are trying to fix it and releasing the patch for that. So if you are thinking that your phone is being heat up after 17.4.1, then that is not the case. It's because the game is not optimized yet. फिर दूसरी मेजर अपडेट एप्पल ने रिलीज़ की है macOS Sonoma 14.4.1. Why 14.4 के अंदर there was a USB hub bug. आपके अगर USB हब यूज़ कर रहे हैं फॉर योर मैक मिनीज़, फॉर योर iMacs एंड फॉर योर मैकबुक्स, आपका जो है ना डॉकिंग स्टेशन विल नॉट वर्क, और वो नहीं चलता था, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लूप होल्स आ रहे थे, एंड एक्सटर्नल डिस्प्लेज जो हैं रिकग्नाइज नहीं हो रहे थे, एंड यू कैन नॉट एक्सटेंड और यूज़ एक्सटर्नल मॉनिटर्स फॉर विद मैकबुक्स और मैक मिनीज़ और iMacs. सो ये एक इशू था जो कि एप्पल ने
हाईलाइट किया और इसको फिक्स किया. एंड बहुत सारे लाइक ओरेकल यूज़र्स जो कि ओरेकल या जावा एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उन्होंने भी सेम इशू रिपोर्ट किया कि दे आर नॉट एबल टू connect or use their Java applications on a Mac device. So Apple has fixed multiple issues and vulnerabilities in macOS 14 Sonoma 14.4.1. और काफ़ी ज़्यादा फिक्सेस की हैं. बैटरी हेल्थ इम्प्रूवमेंट आई है इसके अंदर फॉर मैकबुक्स और एप्पल सिलिकन की. और USB हब्स जो है वो लाइक जैसे बताया मैंने कि रिकग्नाइज नहीं हो रहे थे विद द थर्ड पार्टी और लाइक द हब्स कनेक्टेड. फिर उसके बाद ऑडियो इनपुट या ऑडियो आउटपुट फॉर प्रोफेशनल म्यूज़िक एप्लीकेशंस लाइक लॉजिक प्रो एंड एप्पल म्यूज़िक वो नहीं चल रहा था और उनकी पास वैलिडेशन नहीं हो रही थी. सेकेंड, जो एप्लीकेशंस जावा यूज़ कर रही थी उसकी वजह से भी लाइक दोज एप्लीकेशंस वर यूजिंग जावा, so they were quit or crashed unexpectedly. और एप्पल ने सेम जो निक गैलोवे ने रिपोर्ट किए fixes, and the same like they have fixed here in macOS Sonoma as well. Core Media and WebRTC both are fixed, and they were reported by Nick Galloway of Google Project Zero. So आज की पॉडकास्ट के अंदर सिर्फ इतना ही, सिर्फ 2 अपडेट्स के बारे में. नेक्स्ट पॉडकास्ट इज़ कमिंग वेरी सून एंड आई विल डिस्कस अबाउट iOS 18 एंड iPhone 16 इन डिटेल. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.